Hello, good evening, everyone. Am I audible? Okay, Deepika. Good Supreet, evening. good evening, Ramandeep. How are you? Good, ma'am. Okay, Supreet Singh, can you unmute yourself, please? Neeti Patel, are you attending this session for the first time? Yes, ma'am. Okay, please introduce yourself. My name is Neeti Patel. I am from Gujarat. Okay, and you're prepared. I was trying to IELTS since for 2 months, 2 to 3 months before, but still I not. So how was your score last time? मैम हिंदी में बोलूं? Try to speak in English. एक्चुअली मैम मैंने अभी तक ट्राई उस तरीके से नहीं किया क्योंकि अंदर का डर ही नहीं निकल रहा है अभी भी। So you have not given कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली मैम समझ में सारी चीजें आती है, पर जब बोलना होता है ना तब लगता है जैसे कुछ आता ही नहीं है। एग्जाम नहीं दिया अभी, राइट? नहीं, एग्जाम नहीं दिया है, सिर्फ मैं घर पे बैठ ट्राई ही कर रही हूँ अभी, पर अभी तक नहीं हुआ है कुछ भी। Okay, so how long you are using this baby code application? कब से यूज कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली मैम किया तो है, पर अब प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है क्योंकि टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा है मेरा। एप्लीकेशन को कब से यूज कर रहे हो? बेबी कोड। हाँ, 1 मंथ हो गया है, पर मैंने अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है उसमें। ओके, स्पीकिंग टेस्ट दिया आपने? दिया है, पर मैं उसमें एक्यूरेट मतलब ज्यादा नहीं दिया है, 4 के 5 ही टेस्ट दिया है। हाँ, तो तो हाउ उसमें नहीं, मैंने अभी फ्री में मैम ट्राई किया है, इसीलिए बैंड स्कोर तो उसमें नहीं बताता है ना, तो अभी मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपना इंक्रीज करूं, आफ्टर दैट आई विल। तो उसमें प्रैक्टिस करोगे तभी तो योर कॉन्फिडेंस लेवल विल इम्प्रूव ना। प्रैक्टिस यस ही नहीं मैम। करोगे तो हाउ यू विल रिमूव दिस हेजिटेशन जो आपको हो रही है अभी? बिकॉज सी दिस इज इंग्लिश एग्जाम, यस मैम, the आई level नो। of English will be evaluated here. तो अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट करोगे तो कैसे इजी होगा आपके लिए? नहीं होगा ना। So एक्चुअली try. मैम मैं बैकग्राउंड भी वही है कि हिंदी मीडियम से ही पढ़ के आगे निकले हैं, इसीलिए हेलो। थोड़ा सा But try. डर लगता है। Yes, who's this? Hello. Okay. Who else is attending this session for the first time? Harsh, Ayush, Harsh and Ayush. Please unmute yourself and introduce yourself, please. Harsh and Ayush. Okay, let me ask everybody, did you practice yesterday about your speaking test? How many tests was done? I told Ma'am, you. I was giving. Yes, Samandi?
Ma'am, I gave 2 tests. And how was your score Ma'am, 6. in both the tests? Yes, ma'am. Okay, and before the sessions, how was your score going on? Last score? Uh, 5.5 or 6. Or same. Same going on. Okay, anybody Yes, else ma'am. who has done the speaking test? Yes, ma'am. 3 times done. Oh, so how was your score, Sobia? 2 times 6.5, 1 times 6. And your target is? 7. Yeah. Okay. But Anybody? ma'am, I'm stuck at 6.5. Hmm. I practice a lot. I do practice every day, but still I got 6.5 or 6. Are you using idiomatic language? No, ma'am. Try to use. I don't use. Which you are lagging. That's why I showed you, I guess, last session or last to last session, the marking criteria. Yes, ma'am. 7, 8, and 9. See the difference between band 7, band 8, and band 9. If you are, Yes, ma'am. you're not using idiomatic language, but if you are at 7 band, that means you are using idiomatic language. So try to use, Hmm. okay. And same thing is happening with me, ma'am. Deepika, so how was your score? Are you also stuck at 6.5? So yes, please try to go with idiomatic language. In the application, we provide you EDM, phrasal verbs, and collocations. Please work on that. Start using. Yeah, ठीक है तब तक जब तक उनको यूज नहीं करोगे you will never score 7. true, ma'am. Anybody else who has done speaking test yesterday? Nobody? Love Patel, have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so how was your From score? today, I have joined. What to do? I have done 3 Hello, times, ma'am. ma'am, From today, and I got Mhm. one time 5.5, then in rather 2 6. hello, ma'am. Okay. Yes, Ayush. Please introduce yourself. Hello, ma'am. I'm Ayush from Nepal. I have joined live class from today. What are the things to be required? Hello, ma'am. Yes, yes, Ayush. Missed your voice in between. You're attending this session for the first time, right? Yes, ma'am. I'm attending first time, Okay. and Okay. I am from Nepal, ma'am. Okay. Okay. Great. And anybody else who has done speaking test yesterday? I told you all to do the speaking test in the application. Yes, ma'am. So how was your score, Gagan? Ma'am, 6 or 5.5. Okay. Okay, so let's start today's session. We're gonna discuss about what are the do's and the don'ts of the IELTS speaking. So the candidates who are watching or attending this session for the first time, a very warm welcome to babycode free IELTS live classes. I am Tanu Vilmani, an IDP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. So we are beginning with our live session number 8. We have already done 7 classes of speaking module. If you want to see those 7 sessions, you can rewatch them in our application. Buy the membership and do the multiple tests there. So Ayush, you are attending this session for the first time. Uh, are you comfortable in English? Yes, Okay. little comfortable. Okay.
So see, this is an exam of English, so we have to communicate in English. We can't use Hindi, and Hindi is not your official language, right? So we have already done the reading module, and we have covered 7 sessions of the speaking module. Today is the Okay, 8th ma'am. session. Yeah, right. If you want to rewatch all the missed sessions, you can go to our application and watch there all the missed out sessions. Yes, ma'am. Okay. So today's session is about what are the do's, Okay, ma'am. what Okay, are okay. the don'ts of your IELTS speaking. So anybody, any idea who can tell me ki what is the do, what is the don't? Anyone do, anyone don't. Let's start with do's. What you're supposed to do in your speaking test. Yes. Anyone? What are the do's of speaking? Or what are the don'ts of speaking? Yes, Gagan, Jasleen, Sobia. Anybody who wants to say something? I think One by one, please. natural speaking. Yes, correct. Yes, Sobia. I think it is related to that we don't make a grammatical mistakes Hmm. and speak fluently without any hesitation, Right. something like that. Correct. Okay. Harsh, are you attending this session for the first time? Harsh? Please unmute yourself. Okay. So as you know that speaking part 1, speaking is for 11 to 15 minutes and the part 1 will be for 4 to 5 minutes. So here the examiner will be asking you some questions about the familiar topics, right? So that familiar topics can be your job, your work, your study, your family, your home, your hometown, your likes, your dislike, your personal interest, right? Your hobbies. So notice that these questions are all about you in the part 1. So this part is easier than part 2 or part 3 because they are asking you questions related to you and you have to talk about it, right? So be very fluent with your part 1. Now look at 5 do's and 5 don'ts to make sure that you start your speaking test in the best possible way. Now, first do is know what to expect. Now, whenever you give your test, you know that you're gonna be little nervous. है ना? होते हैं ना? And you don't want any surprises that will make you feel more anxious. So be aware of exactly what will happen when you walk into the एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जब आप जाने वाले हो टेस्ट डे पे जब आप एंटर करोगे एग्जाम रूम में तब क्या होने वाला है राइट जब पार्ट 1 बिगिन होगा आपका जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा उससे पहले क्या होगा यू हैव टू बी प्रिपेयर आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज एग्जामिनर इंट्रोड्यूस करेंगे एग्जामिनर विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एंड आस्क योर नेम सबसे पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे फिर आपसे आपका नेम पूछेंगे सो यू कैन सिंपली रिप्लाई आप क्या बोलोगे माय नेम इज दिस make sure that you use the contraction names rather than name is तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स व्हाट आर कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स won't would not can't cannot so can't is a contracted word won't is a contracted word I'll not I will ठीक है so try you can use contractions here because speaking क्या होती है speaking is informal next question जो examiner पूछ सकते हैं आपसे that can be
what can I call you? So you can simply say you can call me Tanu, you can call me Jasleen, और जो भी आपका निकनेम है, you can even talk about it. अगर आपका कोई डिफरेंट नेम है तो आप वो भी बता सकते हो, बट मेक श्योर जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो वो प्रोनाउंस आप करेक्टली करो, बिकॉज आपकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे इवैल्युएट होने वाली है. सो इफ यू कांट से योर ओन नेम प्रॉपरली, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट नहीं जाएगा, राइट? सो जस्ट यूज योर नॉर्मल नेम अगर आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो. एंड एवरीबडी शुड प्रोनाउंस देयर नेम्स करेक्टली. नेक्स्ट इज, देन दे विल आस्क यू वेयर आर यू फ्रॉम. ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछते ही हैं एवरी टाइम. वेयर आर यू फ्रॉम? सिंपली बताओ दैट आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम गुजरात, जहां से भी आप हो. ठीक है, देयर इज नो नीड टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की कोई नीड नहीं है. एग्जामिनर फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन को चेक करेंगे, योर आईडी, योर पासपोर्ट. सो दिखाओ उनको, शो इट टू देम, और फिर आपका टेस्ट क्या होता है, बिगिन होता है. तो ये 4 थिंग्स हैं जो आपको याद रखनी है कि ये आपके साथ होने वाली है, एंड यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट. जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. ट्रीटेड लाइक कि आपकी एक कन्वर्सेशन होने वाली है एग्जामिनर के साथ, दैट्स इट. कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आप पास या फेल होगे. इट्स जितना अच्छा यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ, उतने अच्छे बैंड्स यू विल गेट, राइट? सो यू शुड नो कि आपके साथ व्हाट टू एक्सपेक्ट, राइट? सेकंड इज क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन. Now, first impression, many students, they often ask me if they smile, are friendly, or give the examiner good eye contact, will they get a high mark? नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर आप स्माइल बहुत ज्यादा करते रहोगे या फ्रेंडली हो जाओगे एग्जामिनर के साथ या एक अच्छा आई कांटेक्ट रखोगे तो आपका हायर मार्क मिलेगा. ऐसा पॉसिबल है भी और नहीं भी. नाउ व्हाई? बिकॉज आपके आंसर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप आंसर्स कैसे दे रहे हो. ऑब्वियसली जब हम किसी से बात करते हैं, वी हैव टू बी लिटिल स्माइल, है ना? वी हैव टू मेंटेन दैट स्माइल. इट्स नॉट वी कैन बी रूड और सिट लाइक अ नम. नो, वी कांट डू दैट, राइट? क्योंकि ऐसा कहीं भी मार्किंग क्राइटेरिया में नहीं लिखा कि अगर आप नाइस हो या एग्जामिनर के साथ आई कांटेक्ट कर रहे हो तो आपको ग्रेड्स अच्छे मिलने वाले हैं. नो. बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके आंसर्स पे वो इफेक्ट पड़ेगा, है ना? यू आर शोइंग कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन गिविंग द एग्जामिनर, और एग्जामिनर एंगेज हो जाएगा आपकी लिसनिंग में, जो भी आप बोल रहे हो आपकी स्पीच में. बट सपोज इफ यू लुक एट द फ्लो और फिर आप एक इंप्रेशन दे रहे हो दैट यू वुड रादर बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम इन द रूम विद द एग्जामिनर. सो वहां देख के बोल रहे हो या फ्लोर पे देख के बोल रहे हो, सो दिस डजंट लुक गुड, राइट? और या फिर आपने शॉर्ट मोनोटोन आंसर दे दिए, सो इससे आपका स्कोर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. अगर आप ओपन हो, फ्रेंडली हो एग्जामिनर के साथ, मोर लाइकली आप नेचुरल साउंडिंग आंसर दे रहे हो, दैट इज द बेस्ट वे. कि आप ओपन रहो, अपने हर आंसर को अच्छे से एक्सपैंड करो, कॉन्फिडेंटली साउंड करो, नेचुरली स्पीक करो, ताकि आपके आंसर्स बहुत नेचुरल लगे और एक अच्छा इंप्रेशन, एक गुड इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़े. ठीक है? और डोंट डू द ओवर आई कॉन्टैक्ट. बार बार भी आई कॉन्टैक्ट नहीं करना. बहुत स्ट्रेंज लगता है जब कोई आपको बार बार स्ट्रेट अवे आपकी आई कॉन्टैक्ट कर रहा है. 15 मिनट्स का एग्जाम है, राइट? प्रिटेंड करो कि आपकी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है विद अ फ्रेंड. इफ यू आर लुकिंग एट द फ्लोर द एंटायर टाइम, फ्रेंड भी बोलेगा कि आप ठीक हो कि नहीं, राइट? सो यू कांट लुक एट द फ्लोर फॉर 15 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली. और या फिर अगर आप कॉन्टिन्यूसली आई कॉन्टैक्ट रखोगे, देन दे विल बी फ्रीक्ड आउट ऑल्सो, है ना, कि कंटिन्यू चल रहा है. सो जस्ट प्रिटेंड कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है एंड यू आर फाइन विद इट, राइट? सो ऑलवेज क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन. इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके स्कोर पे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे भी, राइट? Second is pretend you are interested in the questions. अब आपको ये भी शो करना है कि आप इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन में. ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता और आप ये शो कर रहे हो कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड
और आई डोंट हैव एनी आंसर, उसको फेस करो। मोस्ट आइल्स क्वेश्चंस बोरिंग होते हैं, स्पेशली इन द पार्ट 3। अगर आप किसी को सुनते हो, इफ यू लिसन टू समवन आंसरिंग अ बोरिंग क्वेश्चन, यू विल नोटिस वन थिंग कि उनकी वॉइस जो है वो मोनोटोन हो जाती है, राइट? इट डज नॉट गो अप और डाउन, कोई लेवल ऑफ स्पीच नहीं दिखता, वो एक फ्लैट टोन चल जाती है। सो फ्लैट टोन नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू शो अप एंड डाउन ऑफ योर फ्लुएंसी। आपकी स्पीच का, आपकी पेस का आपको अप एंड डाउन शो करना है एग्जामिनर को, एक फ्लैट टोन मेंटेन नहीं करना। नाउ व्हेन आई स्पीक, समटाइम्स माय पिच इज हाई, समटाइम्स माय पिच इज लो, तो इट डिपेंड्स, ठीक है? इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन में लोअर मार्क्स मिलते हैं। अगर आप फ्लैट टोन में बात करते हो, नाउ सपोज आई से, let's face it, most IELTS questions are really boring. If you listen to someone answer a boring question, you will notice one thing: their voice is monotone, that is, it does not go or down in pitch at all. So ये जो मैंने रीड करा, मैंने एक फ्लैट टोन में रीड करा। आपको फ्लैट टोन में नहीं स्पीक करना। यू हैव टू शो अप एंड डाउन ऑफ योर फ्लुएंसी, नहीं तो आपको लोअर मार्क्स मिलने वाला है आपकी प्रोनाउंसिएशन में। और प्रोनाउंसिएशन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी इंटोनेशन को चेक करता है। इंटोनेशन मींस द अप एंड डाउन ऑफ योर स्पीच। तो जब नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स भी बात करते हैं, उनकी वॉइस भी नेचुरली फॉल भी होती है, राइज भी होती है, डिपेंड कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट? हाउ दे फील एंड व्हाट दे आर सेइंग। ये जब भी आप लोग बात करते हो, व्हेन यू आर हैप्पी, तो आपकी टोन कैसे रहती है, सैड होते हो कैसे रहती है, तो इट डिपेंड्स। जब आप बात करते हो आपकी टोन हमेशा फॉल और राइज होती है। सो इमेजिन कि यू आर लेट फॉर क्लास, you walk into the room and the teacher says to you in a falling tone, sit down please. They are probably telling you through their intonation that they are not happy with your lack of punctuality. However, agar teacher ne bola, if they say it with a high rising tone at the start, so they would probably be telling you that they don't mind that you are late and are happy to see you, right? So टोन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। इट शोज कि आपकी स्पीच कैसे जा रही है। सो सिमिलरली इफ यू प्रिटेंड, अगर आप प्रिटेंड करते हो कि आप इंटरेस्टेड हो एग्जामिनर में एंड एग्जामिनर के क्वेश्चन में, तो वो आपकी इंटोनेशन से शो होता है और आपकी इंटोनेशन वेरी भी करती है उस अकॉर्डिंग। बट केयरफुली, आपको कोई भी चीज यहाँ पे ओवरडू नहीं करनी। ऐसा भी नहीं करना कि आपकी वॉइस बहुत ज्यादा हाई चलती रहे या बहुत ज्यादा ही लो चलती रहे, तो आप क्रेजी पर्सन लगोगे। यू कांट डू दैट, यू हैव टू मेंटेन दैट टोन, ठीक है? सो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, समटाइम्स यू कैन लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर्स की कन्वर्सेशन को सुनो, उनकी इंटोनेशन को कॉपी करो, एक्सेंट को कॉपी नहीं करना, ताकि आपको इंटोनेशन के बारे में पता चले कि इंटोनेशन कैसे साउंड करती है। करेक्ट? एनीबॉडी, एनी डाउट स्टिल हियर? No, ma'am. Next is extend your answer. Now, there is no set amount of words or sentences that you should use in part 1. अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतने वर्ड्स या इतने सेंटेंसेस यूज करने हैं पार्ट 1 में। इट्स अप टू यू। योर आंसर शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट आंसर होना चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू वांट टू शो द एग्जामिनर दैट यू कैन यूज इंग्लिश, है ना? सो आई एम अ स्टूडेंट इज नॉट रियली लॉन्ग इनफ। जैसे कि अगर आप, उन्होंने आपसे पूछा डू यू वर्क और स्टडी, और आपने बोला आई एम अ स्टूडेंट, सो दिस इज नॉट अ रिक्वायर्ड आंसर। आपको इसको एक्सपैंड करना है, एक्सटेंड करना है, राइट? सिंपली ये बोलना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, नो, उसे थोड़ा एक्सपैंड करो। दे शुड नॉट बी टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज पार्ट 1 जो है ये फेमिलियर रहता है, फैमिली, वर्क, सब चीजों के बारे में बात होने वाली है। एंड यू डोंट नॉर्मली टॉक फॉर 2 मिनट्स व्हेन समवन आस्क यू कि आप कहाँ से हो, या आप, अगर आपसे पूछा जाए वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप 2 मिनट तक सिर्फ ये बात नहीं कर सकते कि दैट आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है? देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 2 मिनट्स के लिए तो आपको क्यू कार्ड में बोलना है। सो मेक श्योर, इसीलिए एक एवरेज दी जाती है आपको कि यू कैन टॉक अबाउट मैक्सिमम 2 to 3 सेंटेंसेस इन पार्ट 1।
पार्ट 1 का जब क्वेश्चन आए तो आप 2 to 3 सेंटेंसेस में उसको एक्सप्लेन करो. लॉन्ग आंसर्स आपको क्यू कार्ड में भी 2 मिनट्स के लिए एट अ लेंथ बात करनी है. एंड पार्ट 3 में भी you have to speak for at least 4 to 5 sentences. The general rule is if you only give a single sentence answer with a single clause like I am from Ireland, then your answer is too short. I also don't think that part 1 answer should have more than 3 sentences. 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, right? 2 or 3 is good enough to speak your part 1 answer. So always be careful कि आपको part 1 में कितने answers देने हैं. Fifth do is, it is very bad idea to prepare memorized answer. Thousand of times I told my students कि memorize मत करो please कोई भी answer को, make it natural. Part 1 तो it's very predictable. आपको पता है कि यहाँ पे कौन से questions आने वाले हैं. We have list of questions. Application में जाके देखो, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता. आप have you purchased that PDF? Speaking की PDF? Have you seen that PDF? I guess it costs only 50 rupees. Have you people buy that? No, ma'am. Please buy that No. PDF. No, ma'am. आप एप्लीकेशन में जाके देखो. एप्लीकेशन में once you open the application, यहाँ पे एक शॉप का ऑप्शन आता है, राइट? शॉप के Yes, ma'am. ऑप्शन में स्पीकिंग लेटेस्ट क्वेश्चन बुक है और राइटिंग 2 essays है, टास्क 2. प्लीज परचेज दैट स्पीकिंग लेटेस्ट क्वेश्चन बुक. उसको परचेज करो. उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब क्वेश्चंस विद सैंपल आंसर भी है. सैंपल आंसर्स को सिर्फ रीड करो, मेमोराइज मत करो. रीड इसलिए करना सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आपको कैसे फ्रेम करना है, ठीक है? उसमें लर्न कुछ नहीं करना. मैम यस गगन, ऐप में इडियम्स कहाँ पर है? मेरे को कल मिले नहीं. आप आइल्स के रिसोर्स में जाओ, रिसोर्सेज में वोकैबुलरी में जाओ. सबसे पहले वोकैबुलरी को ओपन करो. राइटिंग के साथ देखो वोकैबुलरी है ना. ऐप ओपन करते ही मिड में वोकैबुलरी लिखा हुआ है. यस मैम. वोकैबुलरी को ओपन करोगे, देखो वोकैबुलरी, ईडीएम्स, फ्रेजल वर्ब्स, कॉलोकेशंस. ओके मैम. सो यहाँ पे ईडीएम्स आपको सारे दिए हुए हैं. सो यू कैन रीड ऑल द ईडीएम्स, उन सब को पढ़ो, ठीक है? Now try to record yourself and listen back and think about something. Now once you do practice today and you record yourself, just check after 2-3 days that could you improve the vocabulary. Like, is there any change between yesterday's recording and today's recording? What was the grammar mistakes that you can fix? Same grammar mistakes you are doing in the last 3 recordings or today's recording. How was your fluency? Did you speak at natural speed or unnatural speed? आपकी intonation कैसी थी? आपने answer extend करे, clearly बोला कि नहीं बोला? So try again and keep practicing. That is why I'm saying कि baby code is providing you live speaking test. तो उसको practice करो. Students they do complain कि मैम हम speaking की practice कैसे करें? Practice with the application ना. और बहुत ही नॉमिनल मेंबरशिप अमाउंट है फॉर अ होल ईयर, 500 रुपीज होल ईयर के लिए. सो डू मल्टीपल टेस्ट. स्पीकिंग इज समथिंग विच कैन नॉट कम्स इन 10 days. यू हैव टू प्रैक्टिस. अगर आपका बैकग्राउंड इज नॉट इंग्लिश, हु वाज नीति आर यू देयर? So Niti, Yes, as ma'am. you are not from the English background, I would suggest you please do at least multiple tests. 50. Now suppose if you want to take out half an hour or 1 hour from your work, 24 hours में से 1 hour you can devote for speaking. Do at least 2 to 3 tests, Okay, ma'am. right? Now what are Yes, the ma'am. don'ts? Don'ts क्या क्या है? Give yes or no answer. Now don't give yes or no answer. That means आपको सिर्फ yes में या आपको सिर्फ no में आंसर नहीं देना. You have to expand your answer. Sometimes students they have a habit of saying yes and no. सबसे पहले yes और no में ही आंसर देते हैं.
because many questions they naturally lead you कि हाँ उसका yes or no में आंसर आएगा, but you must remember कि आप एक टेस्ट में हो. This is a speaking test and you have to show the examiner how good your English skill is, है ना? If you're going to speak only with yes or no, how examiner is going to evaluate? No, he won't be able to evaluate your skills, and he'll be like making you stuck at 6 or 5 or 5.5, never above. So giving yes or no answer does not allow the examiner to judge your ability, and you will get a low mark no matter how good your English is, right? So it's advisable that you should expand your answer instead of giving only yes or no answer, right? Some people they give yes or no answer because they are very nervous and they want the test to be over as soon as possible. So examiner is not there to trick you. Most of them are very nice people. Or even I say 99% the examiners are very nice. They want you to do your best in the speaking. They make you comfortable and they give you hints that yes, you have to talk about it. If you missed out something, they will ask you again that you have to talk about it. So don't be afraid to tell that you are a little nervous, and this will normally relieve the tension also, right? So don't give just yes, no answer. Try to expand your answers. Second is don't go off the topic. Now, some students they try to tell you their life story or entire history of their hometown. When you ask the name or you ask where they are from, तो ऐसा नहीं करना, right? Entire life story या entire history नहीं बतानी, off the topic नहीं जाना. When they ask you a simple question कि where are you from, just explain in 2 to 3 sentences enough. बिकॉज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप इसमें ज्यादा आंसर दोगे दैट मीन्स आप इररिलेवेंट डिटेल्स को ऐड कर रहे हो. सो ऑफ द टॉपिक नहीं जाना, रेलेवेंट आंसर देना है, फोकस्ड आंसर देना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई रिसेंटली आस्क्ड अ गर्ल what she did in her free time, and she told me everything there was to know about badminton. I did not ask about rules, history, great players, positive, negatives of the sport. She just which sport she liked and why. तो उसने सब explain कर दिया. So you should not talk about everything. आप फ्री टाइम में क्या करते हो आपको सिर्फ वो बताना है, 2 to 3 sentences, that's it. ऑफ द टॉपिक जाके सब डिटेल नहीं ऐड करनी, बिकॉज these questions are very focused one. आपसे पूछा गया what you do in your free time, so just explain कि आप क्या करते हो अपने फ्री टाइम में, not adding any irrelevant detail here. So अगर आप irrelevant detail को add करते हो that means you are going off the topic, जो required ही नहीं है. Third one is don't give no answer. You don't get to choose the question, and if you don't know the answer to a question or you simply don't like the question, you don't have a choice, you must answer it. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर आपको आंसर नहीं पता क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको उसको आंसर करना ही है, राइट? रिमेंबर कि पार्ट 1 आपके बारे में है, तो इसलिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ ना आए, राइट? सब चीज आपके बारे में. पार्ट 1 इज ऑल अबाउट यू, आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक, आपका होम टाउन, आपकी वर्क, आपका स्टडी, राइट? एवरीथिंग इज अबाउट यू. सो यू आर सपोज टू आंसर एवरी क्वेश्चन इन पार्ट 1. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा पार्ट 1 में जो आपको समझ ना आए और आप उसका आंसर ना दे पाओ. बट यस, if you don't understand one word in a question, वो acceptable है, आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो to explain कि वो सिंगल वर्ड क्या है जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ आया, राइट? और ये भी एक्सेप्टेबल है कि आप एग्जामिनर को बोलो कि वो रिपीट करे क्वेश्चन को अगर आपको वो समझ नहीं आया और व्हाट दे सेड, राइट? बट डू नॉट अब्यूज दिस प्रिविलेज. ये नहीं कि आप बार बार करोगे और एवरी क्वेश्चन में करोगे. जब ये नेसेसरी है तभी आप पूछोगे एग्जामिनर से, नॉट एवरी टाइम. और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो बी ऑनेस्ट विद द एग्जामिनर एंड टेल देम दैट यू डोंट रियली नो.
and then have a guess. It is not an examination of your knowledge. यहाँ पे आपकी knowledge को check नहीं किया जाता, आपकी English को check किया जाता है. So it is perfectly acceptable कि आप इस चीज को make up करो if you are really stuck. अगर आपको किसी question का आंसर नहीं आता तो honest हो जाओ और honestly उस चीज का आंसर दो. But I have no idea what to think about it or what to say about it, or I have never came across such type of question. Examiner को बताओ, speak in English and tell the story कि आपको ये आंसर नहीं आता, rather than staying quiet or simply saying no. वो नहीं करना. You have to speak about it. Okay? Next is don't speak very quietly. Now this is one of the most annoying things for the examiner, because no matter अगर आपकी English कितनी अच्छी है, if we can't hear you, we can't give you high score. Sometimes you people also बहुत quietly कोई बोलता है, मुझे नहीं समझ आता कि क्या बोल रहा है, तो जब तक सुनाई नहीं देगा, how can we give you a score? If you are confident enough, अगर आप बहुत confident हो, your tone will show that. वो दिखेगा आपकी टोन में, राइट? और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलते जा रहे हो, सो आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं, राइट? सो दिस हैज लॉट टू डू विद योर कॉन्फिडेंस एंड शाइनेस. Make sure you are not talking to the floor, so speak a little louder than normal. Can you see my tone? Can you hear my tone? Feel my tone? That I'm little louder than normally, or I'm speaking in a normal tone? Can anybody evaluate my skills? Yes, Sobia. Yes, ma'am, we can hear you clearly. So how is my tone when I speak? It is very clear and it is louder than the normal one, I think. So you have to speak a little louder than normal one, right? Yes. Examiner will also be recording this test. This is a whole recorded examination. So it has to be loud enough for the recording device to pick up your voice. अगर आप बहुत quietly बोलोगे, how the recording device will record your voice, right? Because suppose करो आपका score आ गया 6 and आपको लग रहा था कि नहीं आपका टेस्ट तो 7 बैंड्स का हुआ है, and you go for revaluation, तो वो रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज ही नहीं सुनाई देगी दोबारा अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो, right? And nobody can evaluate your skills again. There are always 2 examiners. So अगर आपका रीचेक होगा, रिवैल्यूएशन होगा, so how they gonna see? So this is a recording examination. Make sure you speak loud enough, right? So try करो कि आप प्रैक्टिस करो जब एप्लीकेशन में, उसको रिकॉर्ड जब आप करते हो आंसर को, प्ले इट बैक, उसको दोबारा से सुनो. If you can't hear yourself clearly, then you need to increase the volume of your voice a little more. हमेशा जब भी आप स्पीकिंग टेस्ट देते हो एप्लीकेशन में, उसको खुद भी दोबारा हेयर बैक करो, ताकि आपको पता चले हाउ यू आर स्पीकिंग, कि आपके लिए आप जो बोल रहे हो वो क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं. सेल्फ इवैल्यूएशन करो. सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट थिंग. एप्लीकेशन से आपको स्कोर मिलेगा, राइट? एप्लीकेशन में जब आप अपने आंसर्स दोगे आपको स्कोर मिलेगा, बट सेल्फ इवैल्यूएशन भी तो करो, आपको पता तो लगे ना आप बोल कैसे रहे हो, राइट? Now don't be a perfectionist. Examiner knows that you are speaking in a non-native language. आपकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, राइट? आपकी लैंग्वेज इज डिफरेंट, तभी तो आप एग्जाम दे रहे हो. अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होती तो आपको आइल्स का एग्जाम नहीं देना था, राइट? सो डज नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन. वो आपसे परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते. इवन पीपल जिनके बैंड 9 आते हैं वो भी माइनर एरर करते हैं, वो भी स्मॉल मिस्टेक्स करते हैं. एंड द पीपल हु गेट बैंड 7 and 8 दे आल्सो मेक फ्यू मिस्टेक्स, राइट? सो अगर आप ये सोचोगे कॉन्स्टेंटली अबाउट परफेक्ट ग्रामर, परफेक्ट vocabulary, it will reduce your fluency and pronunciation. Fluency और pronunciation 50 marks है, because fluency और coherence आपका एक पैरामीटर है, pronunciation आपका एक पैरामीटर है.
So 4 parameters 25% each contribute करता है, right? So there is no point in trying to use perfect grammar or vocabulary if you are losing half your marks in the process. So speak करो naturally, ये नहीं कि बहुत ज्यादा error कर दोगे grammar के. Perfection means on the point. आप 9 band अगर नहीं ला सकते, try to achieve for 7 or 7.5, right? So speak as naturally as possible, जिसमें आपका focus क्या रहेगा? Speaking at a natural speed, clear pronunciation, grammar and vocabulary also, right? Clear what are the Yes, 5 ma'am. do's and 5 don'ts जो आपको follow करने हैं for your. Yes, ma'am. Now let's look at quickly कि कौन कौन से easy ways है जिससे आप extend कर सकते हो अपने part 1 के answers को. Now see. Now feelings and opinion. See this, you can easily extend your answer by saying how you feel about the question, and it will make your answer more interesting. So the question is, question क्या है? What do you like to do in your spare time, free time? So short answer, I Spare like time. shopping. Long answer, I like shopping because I love trying on new clothes and I always feel more confident when I'm wearing a new outfit. So these are 3 sentences, right? Yes. Yes, You are ma'am. only supposed to answer like this in your part 1. इससे ज्यादा नहीं बोलना part 1 में, please. ठीक है? Okay, ma'am. See the next one, contrasting details. How long have you worked there? कब से काम कर रहे हो? I have worked there for 3 years. ये आपने सिर्फ 1 word का आंसर दिया कि मैं 3 years से काम कर रहा हूँ. आपको extended आंसर देना है. I have worked there for 3 years, but I'm going to change careers next year. So this is 2 sentence answer. 2 to 3 is good enough. अगर आप 1 word आंसर दोगे, that is not acceptable. तो अगर 3 years बोलते, that is only 1 word answer. आपने 1 more sentence add करा, so you're making it 2, right? Next, combining details. Now, instead of giving very short answer, you can add in some extra details with and, with, or also. आप combine करते हो. Do you live in a flat or a house? And you simply say, I live in a house. So that is a short answer. आपने 1 word में answer दिया कि मैं house में रहता हूँ. Long answer is, I live in a house with my 2 brothers and my mom. We have also got a dog and a cat. So again, आपने अपने answer को extend करा. Right? Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, past comparison. Do you play sport? I play football. This is a short answer. I used to love basketball, but now I play football more because that's what my friends are into. Right? So आपने क्या करा? Extend करा अपने answer को. Okay, let me ask one question. You have to raise your hand if you want to answer this question. ठीक है? Do you like your job? Who want to answer this? Do you like your job? Supreet Singh, do you want to answer this question, please? Anybody who wants to answer this question? Do you like your job? No one? Yes, ma'am. Yes, Zubia, please. Yes, I like my job because it gives me a confidence to do something for my career. Correct. Very good. Because you added 1 more sentence, right? Yes. Okay. Anybody else who wants to answer this question? Okay, let's see. Well, I like my job, but I'm more interested toward my passion of singing. Correct?
Anybody else? Okay, next question. Do you work or study? A very simple question, a basic question for part 1. Do you work or study? Yes. Gagan, can you give a try? Yes, ma'am. Yes, please. I'm a student and I'm pursuing my bachelor's in commerce. Yes, correct. Who wants to try this question? Yes, ma'am. Yes, Divya. Currently I'm a housewife, but later I want to study abroad. Like currently I'm a housewife, but later I am planning to study abroad. But there were lots of repetitions, self-corrections, right? So you can say, Yes. now suppose if a person wants to say that I am at the university or I am at university at the moment, but I'm graduating next year and I will hopefully get a job, right? In so and so. Okay, I'm a student, but nowadays I am planning for my higher studies abroad. Just lean grammatical corrections, please. Okay, next question. Is your hometown a nice place for tourists to visit? Yes. Who wants to give a try? Is your hometown a nice place for tourists to visit? And for speaking, please try to speak instead of writing answers in the chat box because I have to evaluate your fluency and pronunciation also. अगर आप type करते हो chat box में, I can't evaluate your fluency and pronunciation. So try to speak when we are having a speaking sessions. Yes. Yes, definitely. There are many things in my hometown that are related to pastime. So tourists are visiting in this place. So what you are supposed to answer here, the question says, is your hometown a nice place for tourists to visit? Yes, it has a really nice beach. It has really nice ABC, whatever your place has. Although it is getting busy these days, but yes, it has beautiful museums or the parks or the lakes, जो भी आपको convey करना है. Okay, now next question. What do you do at the weekends? Zareen, you joined lately. Why? Actually, I was quite busy, so that's why today I got late. Do watch this session once I'm going to upload this in the application, please. It was very fruitful to watch this. Okay. Okay, ma'am, I'll surely do. Yes. Okay. Now, question for you, Zareen. What do you do Yes, at the ma'am. weekends? Sorry, ma'am, I didn't hear it properly. Can you please repeat it again? Yes. What do you do at the weekends? I usually go to excursion with my family members, especially when my kids wish me to go outside with them, and that's how I spend my weekend. But try to make it more fluent. You know how to speak, you know how to extend your answer. So don't make it more casual one. And don't make it like wale pauses nahi aane chahiye, right? Be confident Okay. when you speak. So I usually watch TV or play computer games or go out with my friends or my family, right? Okay. Okay. On weekends, sometimes I go out with my friends for a movie and sometimes I help my mother in kitchen. Oh, right. Shivam, please try to speak instead of writing your answers. Now see, this was part 1 questions कि आप कैसे extend कर सकते हो. Instead of giving answer in one word, try to extend your answer
for 2 to 3 sentences, but 3 से ज्यादा नहीं. ठीक है, 3 से ज्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना. Now some students they ask, how can I use this? The best candidate use English naturally in the speaking test. They don't think, should I extend this with an example or talk about future, and then give an answer. So practice karo slowly, right? पहले slowly करो सारे टेस्ट. Zareen, you can also download the speaking book. आपने speaking की book download करी है? Latest question Ma'am, book. I have one book, but I don't know that book which you are talking about. Can you please tell me the name? Go to the application and see the shop. Once you open the application, home, Okay. stories, shop, and feedback. So once you go Okay, to fine. shop, you will see the speaking latest question book. It costs you 50 rupees only. Okay, ma'am. So you can download that book. They have all the latest questions. Part 1, Okay, part ma'am. 2, and part 3. Practice with that. And even on the live speaking test, वहाँ पे answers को only you can read. Speaking book में सिर्फ read करो, memorize नहीं करना. Only to give you idea कि आपको answers frame कैसे करने हैं. And then do the practice on live speaking test. Okay? Okay, ma'am. Ma'am, can I ask you one question, please? Yes, Zareen. Ma'am, actually, I want to ask you that do babycode application have some features like can they tell us the feedback as in writing task also? You can upload your writing and you can have your score. After how many days they can give feedback about that? Once you upload, see here, go to the writing part and you can write your answer here and then you can check your writing ka band score. It will take few hours and then you can check it. You have to type basically. You can't upload picture but type. Any question Okay. you can do. Once you open the writing part, academic or general, whatever you want to do, or task 2. Now suppose task 2, first one is education and the teacher question. So write your answer here and then check the writing band score. So you will get your band score for writing. Okay, ma'am. Okay. I guess we are left with only one session of speaking. Tomorrow we are going to cover the speaking module, and then day after tomorrow I will start with the writing module. Okay, so be Okay, ma'am. prepared Okay. for writing part. Okay, Okay, ma'am. so Okay. any doubt, any queries related to part 1, please let me know. Candidates who are attending this session for the first time, please go and start your speaking test and do let me know how's your score going on. Is there any improve or not, right? You can practice live speaking in our application. You can rewatch the session on the YouTube and even on the babycode application. Provide your comments, your star rating so that I can know that yes, you people are learning through our videos, right? So let me know if you have any doubt, please. Any doubt, any queries? No, ma'am. Thank you. Okay, then we're gonna meet tomorrow, and tomorrow we will have the complete IELTS speaking test. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay then, bye-bye. Take care all of you. Okay, Thank you, ma'am. ma'am. Bye bye. Thank you so much. Bye. God bless you. Thank you. Thank you, ma'am.